कि कहाँ गया ये रेस्पॉन्ड नहीं करते इसको। ओके, कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है? यस सर। ओके, तो फिर कैमरा ऑन करो, सभी कैमरा ऑन करो। यासिर अभी अभी ज्यादा है। नो सर, मैं बहुत पहले जा गए सर। नहीं, लग नहीं रहा है, शक्ल से लग रहा है अभी मुंह नहीं धोया है। वैसे मैं भी अपना कैमरा किसी वजह से बंद रखता हूँ, क्योंकि कभी कभी मैं भी अभी अभी जागा होता हूँ। तो हाँ, कैमरा सभी ऑन करो। अरे ऑन करो ना कैमरा। अटेंडेंस है ना, मेरा तो उतना नहीं है, तुम्हारी अटेंडेंस मैटर करती है। कैमरा ऑन, रोल नंबर 12, 15, 13, 9, 14, आईफोन भी है। सभी कैमरा ऑन करो। 17 आ गए हैं। ओके, सो कल हमने कुछ प्रिलिमिनरी वर्क किया था ऑन मजूर उलाम थ्योरम। तो में से कोई ये साफ साफ लिख रहा है? आई होप कोई तुम में से ये साफ साफ नोटिस लिख रहा हो, क्योंकि मुझे इसकी एक कॉपी चाहिए। क्योंकि अभी मैं देख रहा था मुंड्स थ्योरम, मुझे उसके 3 वर्जन्स मिले। मैंने 3 बार वो पढ़ाया है ना पिछले सालों में, और तीनों ही बार मैंने अलग अलग प्रूफ कराया है। अब मैं कंफ्यूज हो गया कि तुम्हें कौन सा पढ़ा, तो इसलिए मुझे चाहिए इसकी एक नोट्स कॉपी ना। तुम में से अगर कोई साफ साफ लिख रहा है तो फिर मुझे उसका मैं फोटो स्टेट करूंगा, ताकि वंस एंड फॉर ऑल। चलो, दिलगीर साहब भी आ गए। ओके, सभी कैमरा ऑन करो। लेट मी स्टार्ट शेयरिंग द स्क्रीन। लेट अस फर्स्ट डू दिस। ऐसे अब चूंकि हमने थोड़ा प्रिलिमिनरी वर्क किया था, नाउ वी कैन डू दिस। मुझे लगता है ब्राउन अच्छा रहता है। मजूर गुलाम थ्योरम, जो हमने कल इसका कुछ प्रिलिमिनरी वर्क किया, उससे हमारा काम अब आसान है। सो लेट x and y be real normed spaces, यानी the field जो है वो underlying field of both the spaces is the set of real numbers, and T is an isometry. T is a map from x to y, be a surjective isometry. Actually isometry का मतलब ये भी है कि it would be 1-to-1, तो it must be a bijection, ठीक है, क्योंकि an isometry is always 1-to-1 in a normal linear space. That is, isometry का मतलब ये होता है कि norm of t of x minus t of y is the same as norm of x minus y for all xy belonging to x. And that's understood. Then t is linear, provided t of 0 is 0. Okay, अब इसका proof, मतलब what happens अब, since it is given that, अब मैं लिख देता हूँ, it suffices to show that, it suffices to show that that t is affine. हमने किया था ना last time. An affine map is linear if t of 0 is 0.
ठीक है ना? If T of 0 is 0, then the map is affine, it must be linear. So it suffices to show that, ये हम कर चुके हैं ना, कि अगर T of 0 0 है तो affine map linear होगा. So it suffices to show, लेकिन अगर इसमें वो हमने की थी last time की ना exercise या theorem, पता नहीं मैंने उसका क्या नाम बताया था. Anyway, again since यहाँ चाहे लिखेंगे T of 0 is 0. चूंकि T of 0 is 0, therefore it is sufficient to show that T is affine. Again, since T is continuous, being an isometry, हमारा काम आसान हो जाएगा. यानी it suffices to show that जो हमने दूसरी बारी theorem या exercise किया लो, show that it preserves the midpoint, that is T of A plus B by 2 is equal to 1 by 2 T of A plus T of B, right? For all AB belonging to X. Let's call this star. क्यों? क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं अगर कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है और ये वाली प्रॉपर्टी साथ में है, then it must be affine. और चूंकि T 0 है, अगर T affine है तो T must be linear. तो वही हमें करना है. तो ये एक्चुअली ये जो पहला वाला हिस्सा है, ये वो दो एक्सरसाइजेस है कंबाइन करके, तो हमें सिर्फ ये दिखाना है कि T must preserve the midpoint. ठीक है? तो अगर मैंने ये प्रूव कर लिया तो we are done. Now define W as the collection of all mappings G from X to Y such that G is a surjective isometry that preserves A and B. Isometry, and G of A is equal to A and G of B is equal to B. अगर मैं collection of all mappings लूं, ऐसी सभी surjective isometries जो दो points को preserve करती हैं. Now what I am trying to say is this. Now we claim that, अब इसमें दो claims हैं तो इसको मैं लिखता हूँ claim 1. पहले मैं ये प्रूव करूंगा, if lambda is equal to supremum of this set, supremum of what set? The difference between Z and G and Z, such that G is a surjective isometry belonging to W, and which fixes the points A and B, and Z is equal to A plus B by 2. The midpoint of the points where G, the points which G fixes. Now what we claim that this is less than infinity, and it doesn't blow up. यानी मेरे कहने का मतलब है अगर G प्रिजर्व करती है, यानी मान लो यहाँ पे A और B था, ये फिक्स रहता है ना, यानी it is also equal to G of A, it is also equal to G of B, then we are saying अगर आप यहाँ पे कोई पॉइंट है ना, बिल्कुल जो इनका बीच वाला पॉइंट है Z, जो G of Z होगा वो इससे इन्फिनिटली दूर नहीं हो सकता फॉर एनी फंक्शन. यानी अगर ये फिक्स्ड है कोने, तो बीच का पॉइंट भी ज्यादा दूर नहीं जा सकता. मतलब इट कुड बी एनीवेयर. अगर और ऊपर से इसको डिस्टेंस भी प्रिजर्व करनी है, यानी जो यहाँ डिस्टेंस होगी वही यहाँ भी डिस्टेंस होनी चाहिए. यू कैन सी दैट इन द केस ऑफ R2, अगर मैं इसको डिस्टेंस को प्रिजर्व करने वाली फंक्शन है तो हमें दिक्कत हो जाएगी. देन इट मस्ट बी एक्चुअली 0. लेकिन हम कह रहे हैं इन एन आर्बिट्ररी नॉर्मल लीनियर स्पेस, जो कुछ भी हो सकती है, जिसको हम इस तरह से नहीं देख सकते, है ना, ये तो शक्ल इसकी नहीं बन सकती उसकी. इट कुड बी इन्फिनिटली डायमेंशनल, इट कुड बी कलेक्शन ऑफ फंक्शन, व्हाटएवर, जहां पर भी हमारा नॉर्म डिफाइंड है, देन दिस वुड बी लेस देन इन्फिनिटी. दिस डिस्टेंस बिटवीन the map, the midpoint and the point on which it's mapped by G. Okay, now that is not that difficult. Now given G belonging to W, we have
नॉर्म ऑफ, अब हम यूज करेंगे ये g of z, इसकी आइसोमेट्री का आइडिया। माइनस a is the same as norm of gz minus ga. Why? Because g fixes a, which is the same thing as z minus a, because it's norm of z minus a, because it's an isometry, which implies that if I want to find g of z minus z, it is less than equal to, by triangle inequality, g of z minus a plus norm of a minus z. I just added and subtracted a and used the triangle inequality. But this is equal to, this would be equal to g of z minus a is the same thing as z minus a. Now this can also be written as z minus a. Okay, so that is equal to, but what is z? Z is equal to, so let me write it, this is पहले twice z minus a, वही होना चाहिए ना, twice. Now z is equal to a plus b by 2. It means that twice z minus a is nothing but, let me write it, twice z minus a जो है is equal to b, which implies that 2 into z minus a is equal to p minus a. So that means this norm is nothing but norm of b minus a, right? And since these are two, this is a fixed, some fixed vector, b and a are some number, the norm of a vector is finite, so this is of course less than infinity, and this is true for all g belonging to w, and this is independent of g. So if I take supremum, the right hand side does not change. So this implies that lambda is equal to supremum of this length as g runs over w is less than infinity. So that was the claim one. We wanted to show that this distance, this doesn't just blow up. Okay, claim second, जो कि ज़्यादा important है, हम दिखाएंगे g must be actually identity, and then we are done, actually almost done. Claim second, g of z is equal to z for all g belonging to w. यानी g must fix the midpoint, यानी अगर ये दो पॉइंट्स को फिक्स करती है, जो कि मैं अभी बता रहा था, यानी जो ये डिस्टेंस है ये इवेंचुअली जीरो हो जाएगा, मतलब R2 में तो ऑब्वियस है, मैं कह रहा हूँ हर एक स्पेस में वैसा नहीं है, मतलब वी कैन नॉट एज्यूम जो R2 में हमें दिख रहा है कि अगर दो एंड पॉइंट्स फिक्स होंगे बाय एन आइसोमेट्री, इट मस्ट आल्सो फिक्स द मिड पॉइंट. तो वही हमारा क्लेम है, फॉर एन आर्बिट्ररी नॉर्मल लीनियर स्पेस it must also be true. So we start with this idea of a reflection. Let psi be the reflection, which is an isometry, by the way, map of x in the small z, ये जो मिड पॉइंट है, हम इसको रिफ्लेक्ट करेंगे पूरी स्पेस को, यानी ये जो मेरा था ना, मतलब यहाँ ये दिखाना थोड़ा सही नहीं है, तो मेरे पास a है, b है, उनका मिड पॉइंट है z. What I do, I reflect the whole space. It is just for intuitive. इस पॉइंट को यहाँ पे ले गए, इस पॉइंट को यहाँ पे, तो इन z मैंने इसको रिफ्लेक्ट किया, और हमें पता है उसका मतलब है psi of x is equal to 2z minus x, although of course it does not, मतलब this is only, मतलब ये जो शक्ल है, it's only for to give an idea, हमें तो इससे मतलब है, मैप कैसे डिफाइन. So for g belonging to w, यानी the subjective map which fixes the a and b, consider this map. Consider g star. By g star we mean psi after g inverse after psi after g. Of course हम एक ही स्पेस में घूम रहे हैं. G is a map. What was that? G is a map from x to y. मेरे कहने का मतलब it's well defined. So I'm applying G going from x to y
then I'm applying, right, psi, okay, ठीक है, तो मुझे, so I'm applying G after psi, थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रही है यहाँ पे, क्यों, right, तो अगर मैं, G is a surjective map, right, that fixes the 2 points. Just a minute. हाँ ठीक है, हाँ मैंने गलत लिखा है, क्यों, मुझे लगता है मैंने किसी जगह गलत लिखा, शायद possibly, हाँ, this is a map from X to X. मैं कह रहा हूँ 2 पॉइंट्स को फिक्स कर रहा है, तो what does this mean? T is a map from X to Y. तो मुझे लगा ही था कि कुछ गड़बड़ है, तो मेरा सही था, क्योंकि यहाँ हमें थोड़ा गलती हो गई ना फिर, क्योंकि अगर G, now psi is a map from X to X, so you've got G, then psi, then G inverse, and after that psi. So ये वैल्यू, मतलब these are all inside X, तो मुझे लगा कि मैंने पीछे शायद Y लिख दिया. Okay, so if you consider this map, look at this, what would be G star of A? G star of A would be psi of G inverse psi applied to G of A, but G fixes A and B, so it would be psi of G inverse of psi of A. And what would be psi of A? Now psi of A would be twice Z minus A, right? But that would be twice z, z is equal to A plus B by 2, so it is A plus B minus A, that's equal to B. So that would be psi of G inverse of B, but G fixes B. So G inverse of B should be psi of B, but what is psi of B? Psi of B is A. So G star also fixes it. So यहाँ पे मैंने किया कि G inverse exists. Why? Because of course it's a bijection. क्योंकि isometry subjective तो है by definition, by our assumption, and since it is an isometry, it's also 1-to-1. So it is a bijection. So this is all right. G inverse of B can nothing be B. You just see that कि अगर कोई isometry है, isometry means G of X minus G of Y is the same thing as norm of X minus Y. It implies that अगर G of X G of Y के बराबर हो, it implies automatically, because then this would be 0, which would mean this is 0, so X must be equal to 1. So it is indeed 1-to-1 and therefore a bijection. Okay, so दूसरा इसी तरह से मैं दिखा सकता हूँ, similarly G star at B is also equal to B, right? And since it's a composition of isometries, right, because a reflection is an isometry, G is an isometry, उसका inverse is an isometry, because of again the same thing, क्योंकि inverse exist करता है, इसको तुम मान सकते हो G, इसको तुम मान सकते हो यहाँ पे G inverse of G of X minus G inverse of G of Y. As you can see, G inverse is also an isometry, isn't it? Of course है, क्योंकि G inverse of something is the difference, मतलब same, इतना तो तुम समझ सकते हो. So दूसरा, further, पहले तो ये कि G B के बराबर है. Further since G inverse also belongs to W, we have अब रिफ्लेक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है, मैंने क्या लिखा, राइट, ओके, जरा एक मिनट यहाँ आ जाओ, यहाँ थोड़ा मैं वापस जाऊंगा. ओके फाइन. तो जो रिफ्लेक्शन होती है वो एक बाइजेक्शन होती है, दैट्स ऑब्वियस. तो रिफ्लेक्शन इज अ बाइजेक्शन, a bijective symmetry. So is our G. So उनका composition जो होगा वो भी बाइजेक्शन होगा और सिमेट्री होगा. और इसका मतलब ये है, जो मैं बताना चाहता हूँ इससे पहले,
इससे पहले I want to tell you that G star must belong to W. Reason, G star is a composition of isometries and hence an isometry तो और ये फिक्स करता है दो पॉइंट्स को, that's our क्या बोलते हैं, मतलब that's the collection W, so it must belong to W, which means that G star Z minus Z must be less than equal to lambda, the supremum जो हमने इससे पहले दिया था स्टेप 1 में, ये lambda, क्योंकि ये supremum है and सभी direction where G belongs to W, so okay, this must be less than equal to lambda. Further, now G inverse also belongs to W, जो कि मैंने अभी बता दिया, थोड़ा सा उसमें करना है. We have twice norm of GZ minus Z can be written as psi of G of Z minus G of Z. So that is because psi is a reflection. The reflection का मतलब ये होता है distance from the reflected point to X. तो मतलब शीशे से दुगनी डिस्टेंस होती है ना, अगर हम इमेजेस की बात करें, अगर मैं तुम्हें ऐसे ही बता दूं, लेकिन you can actually prove that this is actually twice norm of X minus Z. So twice norm of, इसको मैं X मान रहा हूँ, इसको Z मान रहा हूँ, so you will get this thing. It's just a consequence of psi being a reflection. That is twice norm of GZ minus Z can be, अगर मैं G inverse लगा दूं, I can write it as, क्योंकि G inverse isometry है, so this would be equal to G inverse of psi of G of Z minus G inverse of G of Z. क्योंकि वो भी isometry, it would preserve the length. That implies, थोड़ा सा लंबा छोड़ा हो गया, that means psi, should I write it like this? चलो एक स्टेप में एक्स्ट्रा करता हूँ, यानी G inverse after psi after G applied to Z minus Z इसके बराबर होगा, because G inverse of G is identity, but that would be, now look at this, twice GZ of Z is equal to psi of GZ minus ZZ, तो इसका मतलब ये है, this would be equal to, right, this should be equal to psi of, मैं अभी बताऊंगा, G inverse psi G of Z minus Z, ठीक है ना, because this is reflection through Z. तो चलो मैं यहाँ फिर से हम लिख सकते हैं, ऐसे ही मैंने, मतलब same thing, not same thing, that this psi of X minus Z should be the same thing as norm of X minus Z for all X. जिस केस में भी होगा, रिफ्लेक्शन की जो डिस्टेंस होगी फ्रॉम द पॉइंट थ्रू व्हिच वी आर रिफ्लेक्टिंग, इट शुड बी द सेम एज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट टू दैट पॉइंट. तो मैंने यहाँ साई लगा दिया, यहाँ पे नहीं लगाया, सो दैट शुड बी डन. ओके, सो दैट इज इक्वल टू G स्टार Z जो मैंने डिफाइन किया माइनस Z. अब क्योंकि G स्टार ऑफ Z दिस इज लेस देन इक्वल टू लैम्डा, राइट, but if I take supremum over, now this is for any G. So if I take the supremum of this should also be less than equal to lambda. So this would imply that taking supremum, चलो लिख देते हैं, taking supremum over all G belonging to W, I get twice lambda is less than equal to lambda, which can be true only if lambda is equal to 0. Otherwise lambda positive होगा तो उससे हम divide करेंगे, you will get 2 is less than equal to 1, which is absurd. So which means that G of Z जो है, it has to be
equal to z for all g belonging to w. यानी अगर end points fix होते हैं तो mid point भी fix होगा if it is an isometry. And if you see what lambda is the supremum of a set of non-negative numbers, है ना यहाँ पे. तो अगर ये 0 है, then everything must be 0. यानी this must be 0 for all g belonging to w, which means अगर ये 0 है तो अगर नॉन 0 है तो उसके अंदर जो वेक्टर है वो भी 0 ही हो सकता है. That means g of z must be equal to z for all z belonging to w. Okay, that's what we expected by our intuition, and we also got the same. So अब इससे मिला क्या हमें? Now let z dash be equal to t of a plus t of b. Now this thing belongs to y. यानी हमने लिया इमेज जो t of t a b इमेज है, फिर वहां पे उसका मिड पॉइंट लिया. We show that. तो जो हमें दिखाना है, हमें बेसिकली दिखाना है t of z is equal to z prime. Of course where z है हमारा, इतना ही हमें दिखाना है, and we are done because of the previous work that we did, those two exercises. Now what we do, consider the reflection psi dash. यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे, of y in z dash. That is psi dash of y is equal to twice z dash minus y. And we note that, अब हम इसको देखेंगे. You have to remember that t is an isometry, it preserves the distance, and psi is also an isometry. So let's see, if I consider them, we note that if I take h equal to psi after t inverse, after psi dash, after t, we claim that this belongs to w. That means it is a surjective isometry from x to x that preserves the 2 points a and b. तो पहले तो ये कि is this a mapping from x to x, and of course we just have to first apply t, then psi dash, which goes from y to y, then t inverse because it's a bijection, fine, surjective isometry, t inverse that goes from y to x, then of course psi that goes from x to x. So we are getting this map. H is a map from x to x. Does it fix a and b? So should I leave it to you? It fixes both a and b. चलो ये तुम खुद वेरीफाई करो. मतलब उसको क्या, एक तो ये सब्जेक्टिव आइसोमेट्री होनी चाहिए from s to x. That's fine because t is surjective, therefore this whole thing would be surjective. Psi is actually सारे मैप surjective है. आइसोमेट्री है तो ये भी आइसोमेट्री होगी, लेकिन w को बिलोंग करने के लिए you should have h of a is equal to a and h of b should be equal to b. तो a का मैं कर सकता हूँ, चलो देखते हैं h of a किसके बराबर. h of a किसके बराबर होगा? Let's see, psi t inverse psi dash, so you should have t of a. And what is psi dash of t? मैं तुम्हें बता दूं, that would be, I think that would be, किसके बराबर होगा? Psi dash कैसे defined है? Psi dash of y is defined by twice t of z minus y. So this would be twice psi of ta किसके बराबर होगा? अरे क्या हो रहा है? It should be, तो ये है, तो psi dash of ta should be equal to twice t of z minus, क्या हो रहा है? कुछ गड़बड़ है. Anyways, तो I've got psi dash of ta. हाँ मैंने गलत लिखा, ठीक है, नहीं, z dash is equal to t of z, so it is twice tz minus y. So what would be psi dash of ta? Psi dash of ta should be twice ta
माइनस वाई, ये वाई मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मैं कुछ गलत लिख रहा हूँ. साइड डैश ऑफ, सो ट्वाइस टी इज z, so it should be t of z minus ta, so it should be side dash of y is equal to twice t of z minus y. So what would be side dash of t of a? That would be equal to, by our definition, twice t of z minus t of a. Okay, इसमें तो दिक्कत है कि मैंने कुछ गलत मैप लिख दिया. सर वो t आफ्टर विच मैं उस पर लगाता हूँ साइड डैश, उसके बाद सर वो साइड t इनवर्स साइड डैश t. ओके, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, चलो इसको कर ही देते हैं. तो h of a इसको प्रॉपरली कर देते हैं. साइड t इनवर्स साइड डैश t applied to a. So that would be psi t inverse psi dash applied to t of a. Now this would be, हाँ मुझे थोड़ा सा ये z dash के हाँ मैंने z dash को गलत लिखा था, यहाँ मैंने गलत लिख दिया, because actually psi of मैं समझा, so you've got psi dash of y, या psi dash of y is equal to twice z dash minus y, but z dash जो है वो है twice ta plus tb, that's z dash. मैं सोच रहा था कुछ तो गड़बड़ हो गई. Minus y, so this is basically twice ta plus t. So what would be psi dash of ta? It is just t of b. That's good. हो गया हमारा काम. तो just psi t inverse of t of b. So that would be psi of b. And what would be psi of b? Psi of b would be again यहाँ पे psi of b क्या था? Psi of b था a. हमने देखा था. So h of a is e, similarly h of b is b, so this belongs to w. अब हमारा काम आसान है. तो अगर ये w में है तो हमें पता है then h of z is equal to z, which implies that psi of t inverse of, where z is equal to, of course, a plus b by 2. So I've got psi dash t of z is equal to z, which implies that, what does it imply? It means psi dash of t of z, because inverses exist throughout, so I should not worry. So it should be t of psi inverse of z. So which would be, I think, t of z, because it's a reflection, right, and it fixes the midpoint. हाँ, it fixes, मतलब यूनिक फिक्स पॉइंट होता है, जहां से हम रिफ्लेक्ट करते हैं वो तो फिक्स पॉइंट होता ही है, बिकॉज इफ साई ऑफ व्हाटएवर इट इज, जहां से भी हम रिफ्लेक्ट करेंगे, साई ऑफ z इज इक्वल टू 2z minus z, sorry 2z minus x, that means psi of x, तो psi of z is just equal to z. ये तो हम पहले ही कर चुके हैं, इसका फिक्स्ड पॉइंट है, which means psi inverse of z, क्योंकि ये बाइजेक्टिव है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है. So psi dash of tz is equal to t of z. Since psi dash is a reflection, and has a unique point and a unique fixed point, z dash, and hence t of z must be equal to z dash, and this completes the proof. Oh, थोड़ा सा लंबा छोड़ा, लेकिन जो हमें करना है वो इससे भी लंबा छोड़ा. अब जो भी थियोरम्स हमारे हैं वो थोड़ा लंबे छोड़े. So let's finish this.
इसके बारे में वैसे कुछ उतना डिफिकल्ट नहीं है, हमने थोड़ा कंपोज किया रिफ्लेक्शंस को वगैरह, एंड वी थॉट दैट जो कि हमारा इंट्यूशन था, अगर कोई एसिमेट्री इन दो पॉइंट्स को फिक्स करेगी तो वो मिड पॉइंट को भी फिक्स करेगी, क्योंकि उसे डिस्टेंस फिक्स करनी है इन अ नॉर्मल लीनियर स्पेस। तो जब मिड पॉइंट फिक्स करेगा और कंटिन्यूअस होगा तो वो एफाइन होगी, और अगर एफाइन मैप के साथ हम जोड़ दें कि वो t of 0 is 0, then it must be linear. So वही हमने यूज किया बेसिकली। ओके, अब थोड़ा सा लंबा चौड़ा जिसके साथ मुझे बहुत टाइम लगा, दैट इज व्हाट वी कॉल मून्स थ्योरम। अब मून्स थ्योरम के लिए भी हमें प्रिपरेशन करनी होगी, और प्रिपरेशन के लिए पहले हमें करना होगा Weierstrass approximation theorem. What does Weierstrass approximation theorem say? Approximation theorem says for any continuous function, you can find a sequence of polynomials that converges uniformly to that continuous function, which is equivalent to saying if I take C01, suppose, a collection of continuous functions on interval 0, 1 under sup norm, right? This is the closure of collection of all polynomials over AP. The polynomials are dense in, 0, 1. मैंने 0, 1 लिया for the sake of simplicity. So I can say this is Weierstrass approximation theorem. But P01 is actually span of monomials, and it is a linear combination of, it can always be written as a finite combination of these functions, these vectors. So इसको हम ऐसे लिख सकते हैं that P01 is span of this, which नहीं sorry, यानी उसका मतलब P01 was span of this, तो इसका क्लोजर जो होगा C01, यानी एक तरह से मैं कह सकता हूँ C01 Weierstrass approximation theorem कह रहा है कि span of these monomials, and if I take this closure, it should be the collection of all functions. And चूंकि ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है, it means the sup norm, यानी यहाँ पर मैं sup norm ले रहा हूँ। Okay, so there is a definition. पहले मैं जरा एक definition set करता हूँ. Let X be a normal linear space. Definition. Let X be a normal linear space. Be a normal linear space. Then a sequence Xn contained inside X is said to be total in कभी-कभी कुछ books लिखती है complete in X if X can be written as span of X1, X2, so on and so forth, उस सब का closure. So therefore मैं कह सकता हूँ कि Weierstrass approximation theorem जो है वो कह रहा है Weierstrass approximation theorem फिर ये कह रहा है हमसे कि 1x x square is a total sequence या